Okay, Assalamu alaikum everyone. कुछ दिन पहले I was posting something as usual on my Pakistani lady bloggers page, and actually I got a message from someone very nice. Ke Wajiha, have you read my blog about this particular topic? And I was like, no, I haven't. So she said, okay, I have also written the same topic and same blog. Would you like to go and check it out? And I went and checked it out, and that's how we actually got connected. And I got to know about her after reading her profile. She has a brilliant profile, and she is such a brilliant person. And I'm actually becoming a fan of her and her qualifications and how she is so motivated to give it back to the society. So here with us is Azra Maqsood. Tell us about yourself a little bit. Hi, Vijaya. That's such a cute introduction. Thank you so much. और PLB Pakistan Lady Bloggers community की वजह से I've run into and I've met so many wonderful kick-ass women. I can't tell you, but anyways, so वो खैर तो obviously you know my profile, but just very briefly, I currently work in the healthcare sector. उससे पहले I worked as a consultant to a World Bank project, again with women. And most of my life, I've done development sector. Most of my life, I've done higher education and higher education management. So I just didn't teach because I was dealing with MBA, MS, and BBA level students. So they were already older kids. I'm not used to working with very young children. So ये हुआ कि obviously age difference भी कम होता था. जिस जमाने में हम पढ़ाते थे, younger teacher होते थे, तो दोस्तियां हो गई. And I'm one of those people who was always, believed in maintaining those relationships and carrying forward those rapports. So teaching करी, research करा, दोस्तियां करी और अभी तक दोस्तियां निभाई. So that's the reason I'm so engaged with women, and I'm very, very engaged with youth also. And because like I was telling you, there's no financial obligation. I just have one kid who studies abroad and, well looked after family, mashallah. So now I think is the time where, I can go and give back to the community. So what I've done is with COVID, I found this opportunity of dedicating at least 4 hours a week when I was working out of home. Up to we've gone back to work full time, plus because I work in a hospital. तो कोई लीव नहीं होते हैं, Saturday भी full working day होता है. So what I have decided is that every week, 4 hours, I dedicate to pro bono mentoring, counseling, consulting, especially with younger kids who are applying to colleges, who are applying for admissions, who want help in writing essays and those type of things. And I'm also working with typically women entrepreneurs and women in the workplace. Both type of women. I can't work with women who are only homemakers because I don't really associate with them. I don't think I can add much value. In fact, they can add value to me. Mm-hmm. So that's what I do generally. That's what my day looks like. It's perfect. And actually, I think बहुत सारी women in Pakistan, they aspire to, such things, and they want to be someone who is giving back to society or doing something at least for themselves or other around them. तो ये topic जो कि बहुत ही interesting topic है, women supporting women at workplace or women bullying women at workplace. तो ये टॉपिक जब आपने सजेस्ट किया, आई वाज ग्लैड कि वी चोज दिस टॉपिक, क्योंकि अक्सर हम लोग वो चीजें इग्नोर कर देते हैं जो सोसाइटी में हो रही होती हैं, और जरा सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं, लोग उनको डिस्कस नहीं करते, और वो एक्चुअली मच नीडेड टॉपिक्स होते हैं टू डिस्कस. तो according to Forbes, I was studying and I was doing my research on this topic, and according to Forbes, social movements such as Me Too, Time's Up are igniting change and bringing women together. But it still remains taboo for women to speak about women on women bullying at work. So the Workplace Bullying Institute found women bully other women up to 80% of the time. And in fact, studies have shown that women who report to women experience a greater frequency of bullying, abuse, and job sabotage. आप क्या कहती हैं इसके बारे में? अब तो मेरे पास बड़ी इंडिजिनस रिसर्च है. जब मैं जिस जमाने में पढ़ाती थी और रिसर्च करती थी, जैसे कि मैंने अपने फेसबुक पे भी डाला, एक MS की हमारी स्टूडेंट थी और हम एक इंडिपेंडेंट स्टडीज करते थे 3 क्रेडिट्स का. तो वो मेरी स्टूडेंट थी सनम पठान. शी वाज एन MS स्टूडेंट, एंड we did a research on typical workplace bullying, harassment and mobbing.
ओके जिसके अंदर देयर इज वन परपेट्रेटर और वो बाकी लोगों को हरास या बुली करते हैं या ग्रुप बना के किसी को हरास करते हैं, दैट्स मॉबिंग. सो उसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग ये फाइंडिंग आई कि जी women when they become bosses, female bosses, they become tend to be very big harassers. और प्रॉब्लम ये होता है कि जो उनके अंडर खवातीन काम करती हैं, एक तो वर्क प्लेस हरासमेंट की रिपोर्टिंग के मैकेनिज्म्स जो हैं वो थोड़े से बहुत ज्यादा उनके एसओपीज डिफाइन नहीं होते, इसलिए लोगों को डिफिकल्टी होती है उनको रिपोर्ट करने की. यूजुअली एचआर में अपनी ग्रीवियंस आप लॉन्च कर देते हैं, बट देन दैट्स इट, राइट. और मेजॉरिटी जो आपके लॉज भी हैं वो लॉज भी, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जो लॉ है, पाकिस्तान में वर्क प्लेस हरासमेंट का लॉ नहीं है, सेक्सुअल हरासमेंट का लॉ है, ठीक है. और वो अभी भी इग्नोर करता है कि जो खवातीन काम करती हैं ऑफिस में उनको सेक्सुअल हरासमेंट के अलावा भी हरासमेंट हो सकती है, बुलिंग हो सकती है और किस्म की भी. वर्क प्लेस में उनके काम में रुकावट डालने को भी हम हरासमेंट में काउंट करते हैं, चाहे वो मेन हो चाहे वुमेन है. सो बेस्ड ऑन दिस स्टडी और बेस्ड ऑन दिस सिनेरियो इन पाकिस्तान, I can always share my observations, जिसको हम ethnographic studies भी कहते हैं, कि सनम की रिसर्च से जो चीज निकल के आई तो वो एक दिमाग में कीड़ा आ गया ना कि नहीं, we need to read about it and we need to find out क्या होता है, बिकॉज हेल्थ में और एजुकेशन में खासतौर पे बहुत ज्यादा खवातीन है. सो मेरे लिए तो फॉर्चुनेटली मैंने उन दोनों सेक्टर्स में काम किया है जहाँ पे आई हैव वर्कड अंडर वुमेन एंड आई नाउ यू नो आई एम अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर. So I've got 40% women working under me, right? So I feel, I see, I analyze, I evaluate, and I relate to exactly Forbes क्या लिख रहा है या blogs क्या लिख रहे हैं या जो हम हरासमेंट की बातें जनरली कर रहे होते हैं. तो एक तो नंबर वन, हरासमेंट को डॉक्यूमेंट करना ही बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, उसके एविडेंसेस और व्हाटएवर, ठीक है. ना कि ये खवातीन जो कि जनरली सटल होती हैं बाय नेचर, वो तो 80% ऑफ द टाइम दे डोंट रिपोर्ट इट, जस्ट they give up. स्टडी भी ये कहती है कि वो जॉब छोड़ देंगी, जॉब चेंज कर लेंगी, डिपार्टमेंट चेंज करवा लेंगी, बट दे डोंट कम फॉरवर्ड टू रिपोर्ट. और दैट इज, उसका रीजन ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है उस चीज के लिए. जब ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट सिस्टम को एनकरेज करेंगे, एसओपीज बना देंगे और उसको एनकरेज करेंगे, इसकी अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, women will come forward and report harassment. They will do it. So true, so true. तो ऐसा क्या होता है अजरा कि आप भी लीडरशिप के रोल्स आपने भी किए हुए हैं, ऐसा क्या होता है कि खवातीन एक्चुअली दे चूज टू बुली अदर वुमेन वर्किंग विद देम? और इससे पहले एक्चुअली जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, मैं उनको थैंक यू कहना चाहूंगी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. और अगर आप चाहें तो अपने क्वेश्चंस कमेंट्स में लिख सकते हैं, यू कैन कमेंट और यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस एंड वी विल बी टेकिंग योर कमेंट्स नाउ. अच्छा, तो मेरी रिसर्च के हिसाब से लाइक women who rise to the top often, they carry on a more militant style of leadership to fit in and succeed, and it's usually called this toxic masculinity. It's like when women model their male peers action to lead successfully. आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अच्छा, हिस्टोरिकली हम जब भी, बाय द वे आई वाज आल्सो परस्यूइंग अ पीएचडी इन वैल्यू बेस्ड लीडरशिप. सो लीडरशिप के ऊपर तो मिलियंस ऑफ रिसर्चेस और स्टडीज हैं जो कंपलसरी रीडिंग थी की थी. अगर वजिया आप भी टीचर हो, अगर आप लीडरशिप की हिस्ट्री में जाओ, लीडरशिप रिसर्च को देखो, तो लीडरशिप में जब हम लीडर्स की बात करते हैं, लोग लीडरशिप को एज अ प्रोसेस नहीं देखते हैं, लोग लीडरशिप को लीडर से एसोसिएट करना शुरू करते हैं. दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू डू, राइट? तो जब भी आपके जहन में लीडर आता है तो 99% ऑफ द टाइम इट्स अ मेल लीडर, it's not a female leader until unless you have people like Jacinda Ardern, who's a role model when you talk about how to tackle all situations across the world. So leadership unfortunately इतनी associate हो गई है masculine role के साथ कि people women actually feel कि उन्हें लीडरशिप रोल में उस फ्रेम में, लीडरशिप रोल के फ्रेम में आने के लिए उनको अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स या अपनी ट्रेट्स छोड़ के मैस्कुलिन ट्रेट्स अपनानी पड़ती हैं. True. And that is the reason you come across the term toxic masculinity. अब उसमें ये होता है कि by nature a woman is supposed to be carer, she's supposed to be nurturing, she's supposed to be soft, she's supposed to be nice,
She's supposed to be more friends. These are characteristics you think of when you think of women. But unfortunately women ये समझती हैं कि हमें अपनी इन characteristics को पीछे रखना है और हमें male characteristics adopt करनी है जिसकी वजह से हम भी उस leadership position पे आ जाएं. ठीक है? For all these women, I strongly suggest कि आप please Jacinda Ardern जो न्यूजीलैंड की prime minister है, you've got to read about her, you've got to study her, you've got to watch her videos and see the way she has actually led. और इस कोविड में तो ideal examples दिया जा रहा है कि there are 9 premiers, 9 country heads, all women जिन्होंने सबसे पहले कोविड को कर्ब किया या कंट्रोल किया, right? So coming back to your question या your debate या your argument या जिसके ऊपर हम एक डिस्कोर्स कर रहे हैं कि women इस तरह क्यों करती हैं, तो women ये फील करती हैं, उनकी अपनी obviously insecurities होती हैं, वो ये फील करती है कि जिस वक्त हमने masculine roles और masculine traits adapt कर ली तो हम लीडर हो जाएंगे क्योंकि majority leaders are unfortunate है. We as women should be using our abilities and our skills which make us, sugar and spice, everything nice wala. So true. We should be following that. We should be following that to lead and lead differently from men. ठीक है, but unfortunately हम समझते हैं कि men वाली characteristics अपना के हम lead बेहतर कर सकते हैं. It's sad. सही बात है. और मेरे ख्याल में मैंने जब भी लीडरशिप के बारे में whenever I read about it, people say कि empathy is the biggest personality trait that someone should have when you are a leader. और खवातीन के अंदर ये trait originally बहुत होता है, naturally बहुत होता है. तो खवातीन को actually they don't have to go for that masculinity क्योंकि males को usually ये trait अपनाना पड़ता है. खवातीन में ये already होता है. तो I don't know why they prefer, but maybe because they have come a long way and after a lot of struggle they get that leadership. तो उनको लगता है कि शायद leader should have all these qualities. इसके बारे में when I was reading तो मैंने देखा कि there was someone called Peggy Claus. He was a executive coach in Berkeley and he has said it's called the pink elephant in the room. So when a woman is leader, she resembles to a pink elephant who is trying to boss other people around her, and she wants to be that leader, बहुत ही firm और बहुत ही rigid kind of leader. And I was reading another research, it's published in Forbes again, and it said that positions making 25% of women hold C-suite positions, making the competition to get to the top fierce. For this reason, some women who make it to the C-suite are determined to prove to men they are not like other women. They begin to see themselves as more driven and superior than other women who haven't been successful in climbing the corporate ladder. So somehow उनके अंदर ये एक feel भी आ जाती है कि शायद they are superior than other women or they are more competitive and they are more career driven. What do you think? अच्छा, तो इसके अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग एक इन्हीं रिसर्च का वजह जिनका आप जिक्र कर रहे हो उसके अंदर प्रॉब्लली आपने ये भी पढ़ा होगा कि एक बिहेवियरल साइंटिस्ट ने जो है चिंपैंजीज के ग्रुप के ऊपर भी रिसर्च की हुई है. और चिंपैंजीज बिकॉज आपकी डार्विन की थियरी है कि ह्यूमन बीइंग्स आर बेसिकली डिसेंडेंट्स ऑफ दिस जनरेशन या दिस पेडिग्री में भी. तो उसमें यह है कि जो मेल बबून्स और मेल चिंपैंजीज होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को लिफ्ट करते हैं. दे आर ऑलवेज सपोर्टिंग मॉरली टुगेदर एंड ऑल. ऑन द अदर हैंड जो फीमेल चिंपैंजी होती है शी इज नॉट लाइक दैट. वो हमेशा जो है वो she is always in the struggle to attract the male and take him away, and she will not support other female chimpanzees to form a clan or to form a tribe. Although research को prove नहीं कर पाए, there's been a lot of controversy and a lot of debate on this research, but because Darwinism के theory के believers believe करते हैं, so वो उसकी analogies draw करते हैं कि जी that is the way it is. सही है. आपको बचपन में you have boys, so you can easily maybe compare के when boys have to share their homework or when boys have to help their friends cheat in exams or whatever, they have no problems with it, But when it comes to women, I'm not saying cheating is a great thing. I'm just talking about the camaraderie that you form, right? So yes. women are comparatively more particular about these types of things, and they're more
they're more into themselves and they're more, उनका अपना ambitious जो है, I'm not going to say selfish, लेकिन बहुत self centered होता है, and she wants to do things on her own and grow on her own. जब ये Yes. होता है ना, हाँ, ये problem आता है ना, तो क्या होता है आपको कि जब like supposing if I'm a boss and I've come to a C-suite position and I'm on the chairman of the board, a chairperson of the board actually, or I am basically a chief executive officer, I'm an ED, or I'm the chief operating officer. So hota ye कि someone who wants to come up to that position, I'm just going to look at her and I'm going to say, she cannot get it easy. I struggled my way to do it, and she needs to learn those ropes to move to where I am, right? I may not be thinking in a very negative way. अब मैं इसको दोनों तरफ से evaluate करती हूँ, positive भी negative भी. Positive side इसका ये है कि देखो, when you want to reach at the top, it's a competitive world. There are only 17% women up there. So जब आप इस competitive journey को complete करके ऊपर आते हो ना उसकी suite की तरफ, you have to realize कि आपने बहुत सारे hurdles cross करने होते हैं, आपने बहुत सारी मुश्किलें गुजार के ऊपर आनी होती है. And if I am tough with you, it's because I want you to learn those things and go to the top. ठीक है? Perfect. So this is a positive way of looking at it. The negative way, or what happens naturally, is the woman's own insecurities, the woman's own feeling of jitterness, the woman's own feeling of, oh my God, अगर ये मुझसे smart निकल आई, अगर इसने मुझसे बेहतर काम कर लिया, और अगर ये मेरे मेल काउंटरपार्ट्स की नजरों में ज्यादा प्रोमिनेंट हो गई, तो where does it leave me? मैं तो इतनी मेहनत करके यहाँ पे पहुंची हूँ, राइट? अच्छा, सरकारी इदारों में बाय द वे मेहनत करके लोग कम पहुंचते, रैंकर्स होके ज्यादा पहुंच जाते हैं. आई कैन टेल यू दिस, राइट? अल्लाह का शुक्र है मुझे सिर्फ 5 साल हुए हैं सरकारी इदारे में, बट आई नो every 5 years you get promoted to an upper rank. So अगर आप 20 ग्रेड में आज को आ जाते हैं, तो it's not because of purely merit alone, it's because of the ranking system and because of the government's promotion policies, जिसकी वजह से आप आ जाते हैं, राइट? वहां पे किसी को कोई fear नहीं होता. Let me also tell you this. You might have 20 women sitting in that position, but unfortunately majority women जो है आपकी कुछ पोजीशन पे ऊपर जाने के बाद, because of family pressures, because of work pressures, because of younger children at home, they fall behind. या तो काम छोड़ देती हैं और वापस वर्कफोर्स में आती हैं, और जब वापस वर्कफोर्स में आती है तो मेरा जैसे बॉस कहेगा, oh my God, she's not they have ambitious. to start from zero. Yeah, she's not career oriented. ये कैसे टॉप पे आ सकती है? ये तो बच्चे संभालने के चक्कर में 6 साल छुट्टी करके बैठ गई थी घर पे, So true. As a woman boss, I have to understand and support those things. ये वाली जो support system है, ये female boss के होने से ही आएगा. Male boss नहीं समझता इन चीजों को, right? So True. if you have a female boss there, आपके लिए तो ये चीज advantage में जानी चाहिए. For all the females who work there, कि जी, I want to push and I want them to grow like in my organization. क्लिनिकल साइट पे यस बहुत सारी फीमेल्स होती हैं, नर्सिंग में बहुत हैं, मेडिसिन में बहुत हैं, पैरामेडिक में बहुत हैं. आई वर्क इन अ कार्डियक हॉस्पिटल, सो कार्डियोलॉजी में विमेन कम आती हैं, बट अब बढ़ना शुरू हो गई हैं, राइट? बट व्हाट आई हैव डन इज, क्लिनिकल साइड को छोड़ के जो नॉन क्लिनिकल साइड है, मैंने वहां पे बहुत सारी खवातीन को इंडक्ट करना शुरू किया. नॉट बिकॉज आई लाइक वुमेन, बट बिकॉज वो वाकई मेरिट पे आ रही थी. ठीक है? सो माई हेड ऑफ सप्लाई चेन, जो कि एक बहुत ही male dominated career hai, my head of supply chain is a woman, and my manager for supply chain is also a woman. My head of ERs, my head of all my wards, not just necessarily nurses, but all these managers, they're also women. And I want to create, as a boss, I want to create a culture जहाँ पे मुझे लगता है कि फीमेल कैमराडरी, अगर मैं आज कोई लेगेसी छोड़ के जाऊंगी तो people will move it along. ठीक है ना? Yes, I am a tough boss. I'm a bad boss, for a lot of people. We have to contact your, people working under you. I am a bad boss to men and women both. I don't make that discrimination, right? In fact, I've been told कि oh my God, तुम बहुत बड़ी women lib की person हो और तुम बहुत support करती हो. मैं कहा yes, if she's pregnant and she wants 3 months off, I am going to support her. Why not? Yes. I understand that, right? कितना सपोर्टिव होगा वो एनवायरनमेंट जो एक वुमन लीड कर रही है वुमन के लिए. अगर वुमन ये ना देखे कि भाई वर्क इज वर्क, ऑब्वियसली यू हैव दिस वर्क लाइफ बैलेंस जो आपको मेंटेन करना होता है, और वुमन को ज्यादा करना होता है, बिकॉज वुमन के साथ कहीं ना कहीं गिल्ट भी अटैच होता है कि हाँ मैं घर छोड़ के आई एम वर्किंग, सो शी नीड्स टू बैलेंस हर वर्क एंड लाइफ बोथ. मैं आपको आई विल जस्ट टेक 1 minute to
this segment. I'll give you an example. 2 लिफ्ट ऑपरेटर्स थी, तो हमारी ये लिफ्ट ऑपरेटर्स भी हैं खवातीन, बाय द वे, राइट, जो कि 11 ग्रेड, 5 ग्रेड और 6 ग्रेड की बेचारी खवातीन है, चौकीदार के रैंक में आती हैं वो, राइट, सिक्योरिटी के लिफ्ट ऑपरेटर्स हैं. They were being sexually harassed by their bosses. Sexually harassed. ठीक है, उनको ये कहना, ओहो तुम तो इतनी रेड लिपस्टिक लगा के आओगी तो तुम्हें लड़के देखेंगे ना, टाइप ऑफ थिंग्स, राइट. ये मेरे लिए तो हरासमेंट में फॉल करती हैं ये सारी बातें. एनीवेज, हैड आई नॉट बीन देयर, वो कभी ये रिपोर्ट नहीं करती, लिख के नहीं देती, बेचारी पीती रहती और रिटायर करके चली जाती, राइट. मैंने उनको 1-2 दफा अपने स्टेशन पे रोते हुए देखा, तो आई वॉकड अप, बिकॉज मैं राउंड्स लगाती हूँ, एंड आई सेड क्या मसला, दे सेड हम आपसे आके बात करें, आई सेड आ जाओ. एंड द टाइप ऑफ थिंग्स दे टोल्ड मी, आई वाज शॉक्ड. हमने इंटरनल एक कमेटी बनाई, क्योंकि उनके जो बॉस थे 18 ग्रेड के फौजी अफसर थे. हमने एक इंटरनल कमेटी बनाई और उस कमेटी ने प्रूव किया कि ये बॉस सेक्सुअल हरासमेंट को इनकरेज कर रहा है. खुद नहीं कर रहा होता है, लेकिन उसके जो छोटे स्टाफ करते हैं उनको वो वॉर्न भी नहीं करता है, डांटता भी नहीं, चिढ़ता भी नहीं, राइट. जब मैंने देखा कि ये जो टॉप के लोगों ने इंक्वायरी छुपा दी है क्योंकि वो एक फौजी से डर रहे थे, आई टोल्ड दीज वुमेन प्रोविंशियल ऑम्बड्समैन को कंप्लेन करेंगे टू द सेक्सुअल हरासमेंट सेल. विदिन 6 months प्रोविंशियल ऑम्बड्समैन की रूलिंग आ गई. Those 3 people were fired. पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला केस है जो सेक्सुअल हरासमेंट में लोग निकाले गए, 18 ग्रेड का फौजी अफसर. Oh wow. So you know we were very very proud of that कि भाई मतलब अब हमें लोग एग्जांपल के तौर पे यूज करते हैं कि अगर NICVD में 5 ग्रेड की सिक्योरिटी लिफ्ट ऑपरेटर्स के साथ ये इंसाफ मिल सकता है तो किसी को भी मिल सकता है. Perfect. So I wanted to share this here, and you know, no, that's an achievement, and thanks for sharing it. और लोगों को भी शायद इससे कॉन्फिडेंस मिलेगा कि we can actually report, not only males, females भी अगर आपके साथ ऐसा कर रही हैं तो you can. और actually बात ये people don't report. वो support system चाहिए जहां लोग report करें, report कर सकें. True. अच्छा, एक क्वेश्चन आया हमारे पास रीमा खान का. She is asking कि do these women realize that they are bullying other women, the जो toxic bosses की हम बात कर रहे थे, they do it intentionally? Yeah, रीमा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है रीमा. हाफ ऑफ द टाइम ये जो इतनी ज्यादा मैस्कुलिनिटी ट्रेट्स के साथ ये इतनी टॉक्सिक हो जाती है कि वो कहती है यार अगर मेल बॉस भी डांट रहा हो तो क्या फर्क पड़ता है, अगर मैंने डांट दिया तो क्या हो गया. उनकी मेंटालिटी ये हो जाती है कि यार मेल बॉसेस भी तो ये हरकत कर रहे होते हैं, कोई मेल बॉस ये काम करेगा तो तुम आके चीखोगे आगे से कि जी मुझे एक मेरे मेल बॉस ने डांट दिया, राइट. We don't expect women to behave like men. We expect, like you said, Vajia, empathy, right? True. So half of the time, वो अगर ये हरकत कर भी रही होती है तो intentionally का वर्ड से बेहतर वर्ड है habitual. Toxic masculinity में वो habitual हो जाती है इस तरह की हरकतें करने. And they don't even realize that they are doing this. Yes. उनके लिए it's wow. I'm like a male boss. I'm like the male boss. That's how they look at it. आपने सुना होगा बहुत सारी, there are a lot of खवातीन who are like, oh my God, ever since I was young, मेरे सारे friends तो men होते थे. I've always played sports all my life, and I get so well with male company, and I don't get along with women. Toxic mentality की, toxic masculinity की ये birth है, ये growth है. ठीक है ना, दिस इज व्हाट्स हैपेंड. एंड I'll give you a very interesting example. मैंने अपने फेसबुक पे से मेजॉरिटी जो पुराने जानने वाले मेन थे उनको रखा है, नए वालों को निकालना शुरू कर दिया. मैं कहूँ what does why does a 23-year-old want to friend me? Maybe because they want to learn from you. I hope so, but that's not the case. I will send you some screenshots. Oh, okay, all right. अच्छा, वो स्क्रीनशॉट्स की कहानी तो टोटली डिफरेंट है. वो तो आजकल लोग फारिग भी हैं कोविड की वजह से ना, इस वजह से भी स्क्रीनशॉट्स. लिंक्डइन पे लोगों को और कोई काम नहीं है. मतलब बाकी सब तो आप छोड़ें सोशल मीडिया, लिंक्डइन बड़ा बिजी है आजकल. अच्छा, एक और क्वेश्चन भी रीमा का है, वो भी ले लेते हैं, फिर हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं. Do women in junior roles bully their lady boss as well by playing woman card or woman sympathy? Yes, they do. Acha, some of these women workers, some of them become very smart, and they know कि जी हमने जी I won't take a name here. I don't want to take a company's name, but this was a bank which is a woman's bank typically in Pakistan, right? Mm-hmm. I didn't take the company's name. So, but yeah, I did not name the company. Thank you.
ठीक है भाई ये मोरल तो वहां पे एथिकल वैल्यूज हमें फॉलो करनी होती yeah हैं जब हम fine हायर that's करें। fine that's fine I although ये research में है but it's okay so what I did was मैं उनके साथ कुछ ट्रेनिंग सेशंस करवा रही थी मैं भी आपको एक जरिए आपको मैं आइडियल एग्जांपल देती हूँ मैं उनके साथ ट्रेनिंग सेशन करवा रही थी और मैंने बैंक की प्रेसिडेंट को कहा मैंने कहा देखें अगर आप अपने बैंक में ट्रेनिंग सेशन कराती है ना तो उस सेशन में फिर लोगों को ये फिक्र होती है हमने ये वाली शीट कंप्लीट करनी है हमने ये वाला असाइनमेंट कंप्लीट करना है लोग बिल्कुल दिमाग लगा के ना ट्रेनिंग पे फोकस नहीं करते और आप मुझे ट्रेनिंग के आप पैसे दे रही हैं राइट you've inducted me as a corporate trainer so please use that money wisely so I told them so we took them to another venue outside of their office somewhere else amazing auditorium चाय भी आ रही है कॉफी भी आ रही है पता नहीं करें you know और अचानक से I realized कि एक छोटी सी खलबली टाइप चल रही है I'm like क्या हो गया they're like ओ वो आपको पता है कि जी मिलाद नबी का महीना है और आज ऑफिस में मिलाद है I'm like so नहीं वो एक्चुअली ना चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट होने वाली है मैंने कहा आपकी प्रेसिडेंट ने अब दे वर ट्राइंग टू गेट सिंपैथीज आउट ऑफ मी राइट कि हम कहेंगे प्रेसिडेंट वुमन है और वो आ रही है और ईद मिलादुन नबी भी है तो अजरा तो वो ठंडी हो जाएगी उनको पता नहीं है अजरा कितनी टफ है आई एम लाइक लुक योर प्रेसिडेंट engaged me on this particular date knowing आपके ऑफिस में ईद मिलादुन नबी का फंक्शन है राइट शी अंडरस्टैंड्स कि ये 30 खवातीन अटेंड नहीं करेंगी and I don't care you don't have to go and suck up to your president just because कि ईद मिलादुन नबी में वो चीफ गेस्ट बन के आ रही है और आपने उन्हें फूल देने ठीक है आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा उसका राइट so Rima here is the answer to your question they do try to get sympathy votes but at times those votes work at times they do not work right if there was a sympathy like you know ये women sessions attend करने के मुझे ये बड़ा प्रॉब्लम होता था आधों की सास को डायरिया हुआ होता था तो they wanted to rush home आधों के बच्चों के टीथिंग प्रॉब्लम्स होते थे लाइक यू गाइस आर कॉर्पोरेट वुमेन राइट पूरा दिन ऑफिस में होते हो तुम लोग मेरे ट्रेनिंग सेशन में तकलीफें क्यों होती हैं जस्ट बिकॉज आई एम अ वुमन यू थिंक मैं तुम लोगों को लेट गो करूंगी योर कंपनी इज पेइंग मी दिस इज नॉट फेयर मेरी एथिक्स के अगेंस्ट है तुम लोगों को हाफ डे करके हाफ ट्रेनिंग से जाना है तुम्हारे पास अप्रूवल होनी चाहिए अपनी मैनेजमेंट की आई डोंट केयर इस तरह तो आधा मेरा हॉल खाली हो जाएगा योर कंपनी इज पेइंग मी यार फॉर टू डूइंग इट सही बात है हाँ so sympathy होती है sympathy vote भी होते हैं some women are yes they know how to play their cards right I'm so sorry to be saying it in a negative way they might know how to play those cards right and you know ससुराल बीमार शोहर teething वाले बच्चे and these are or being pregnant सबसे बड़ा card you know these are the type of cards women use but if you've decided to be in the corporate world, if you've decided to make a career and move up to the top, these are some challenges or issues जो आप सोच के आते हैं अपने ज़हन में. So please इनको mitigate करें and Vijay and I will talk about strategies, you know, कि इनको we will mitigate कर सकते हैं इन चीजों को. So yes, they do play the sympathy card, and some ullu bosses fall for it. मैंने ऐसे भी सुना है कि फीमेल जो एम्प्लॉइज होती हैं वो मेल बॉस को भी बड़ा मैनिपुलेट करती हैं कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकती आप किसी और को दे दें एंड देन मेल बॉसेस एक्चुअली मैनिपुलेट मेल एम्प्लॉइज के यू डू दिस वर्क एंड ऑल दैट हाँ ये this is also common and again it depends on के वो bosses कितने objective और कितने neutral है plus organization culture का भी एक थोड़ा सा फर्क होता है ना कुछ organizations में like in my organization if I walk up to a male senior male consultant's room he will make sure कि उसका दरवाजा खुला हुआ ठीक है ना he will never close his door right I wasn't used to it because I came from the private sector जहाँ पे ऐसी चीज नहीं होती थी and I'm like AC चल रहा है दरवाजा खुला हुआ है मुझे बात समझ नहीं है but then someone told me look there have been cases here जहाँ पे कुछ female staff ने जाके claim किया है कि जी ये हमसे you know he uses अजीब सी language use करता है तो या हमसे you know he's trying to make a pass on us या whatever I don't know कितना सच था कितना झूठ था but I have noticed yes women also tend to do that they will take advantage और अगर वो weak boss ऑब्जेक्टिवली वीक बॉस है तो वो उसकी ब्लैकमेलिंग में या उसके प्रेशर में आके बेचारे मेल एम्प्लॉइज को मैनिपुलेट करके उनको रात 11-11 बजे तक बिठा के काम करवाते हैं यस इट हैपेंस सही है अच्छा अब हम वहीं से वापस कनेक्ट करते हैं जहाँ पे हम वर्क लाइफ बैलेंस की बात कर रहे थे कि यूजुअली होता क्या है कि जो बॉस है वो तो बड़ी बहुत हार्ड वर्किंग है डेडिकेटेड है और मे बी उनके यू नो एज यू सेड कि आपके बच्चे ऑल ग्रोन अप and now you don't have that much family responsibility मगर जो young employees हैं उनकी हो सकता है family responsibilities भी हों अब boss expect करता है
कि भाई जितना टाइम और जितनी डेडिकेशन से आई एम वर्किंग, द एम्प्लॉय शुड आल्सो वर्क द सेम अमाउंट ऑफ टाइम. एंड समटाइम्स यू नो द बॉस गोज ओवरबोर्ड कि भाई वीकेंड्स, आफ्टर वर्क, और बहुत सारे ऐसे टाइम पे भी फीमेल बॉसेस एक्चुअली या वो मॉर्निंग में किसी चीज से बिजी हैं, स्पेशली आफ्टर दिस ऑनलाइन वर्किंग आवर्स. मॉर्निंग में आप बिजी हैं, आप लेट उठी हैं, आप चाह रही हैं कि अब मेरा एम्प्लॉय बैठ के 5 बजे के बाद काम करे, जबकि आपका एम्प्लॉय बैठा हुआ है सुबह से वो काम कर रहा है. तो आई हैव सीन बॉसेस ऐसे भी जो दे वर नॉट अवेलेबल कि भाई 9 से 12 का वर्क टाइम है ऑनलाइन अगर आपका, वाइल टीचिंग और वॉट एवर, 12 बजे के बाद बॉस ऑनलाइन हो रहा है कि भाई अब हो रही है कि भाई अब मैं काम करना चाहती हूँ, आई एम रेडी, लेट्स हैव अ मीटिंग एंड ऑल. तो ये चीज भी एक यू नो बॉसेस को रियलाइज करनी चाहिए कि दिस इज नॉट पॉसिबल, यू हैव टू वैल्यू अदर पीपल्स टाइम एज वेल, राइट? जनरली हाँ, बोले बोले आप कंप्लीट करें, देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट पीपल कि भाई वो अब अपना जो एक वर्क लाइफ बैलेंस है वो सिर्फ इसलिए लूज कर दें कि यू आर मोर डेडिकेटेड या आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है एक्स्ट्रा काम करने के लिए. हो सकता है उनके पास नहीं हो, दे हैव लिटिल यंग किड्स एंड दे आर नॉट रेडी टू डू दैट. हाँ, सो नॉर्मली अगर मैं एक टिपिकल एक प्राइवेट सेक्टर की वर्क सेटिंग की बात करूंगी तो पीपल यूजुअली वर्क 9 to 5 5 days a week. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माय इंडस्ट्री. हेल्थ केयर में तो हम 24/7 काम करते हैं, राइट? सो आई एम नॉट इवन गोइंग टू टॉक अबाउट माय इंडस्ट्री. बट नॉर्मली बॉसेस भी इस चीज को रिस्पेक्ट करते हैं कि जी, क्योंकि देखिए ना, वजह इफ यू हैव यंगर चिल्ड्रन ऑफ एनीबडी एल्स, इवन इफ आई हैव यंगर चिल्ड्रन, राइट, मुझे पता है कि 9 to 5 में मैं चाहे ऑनलाइन काम कर रही हूँ चाहे मैं ऑफलाइन काम कर रही हूँ, 5 बजे के बाद के टाइम में मैंने कुछ फंक्शंस किए हुए होंगे ना. दिस इज द टाइम आई वांट टू स्पेंड टीचिंग माय चिल्ड्रन. उनका होमवर्क उनके साथ बैठ के करना है, या उनकी प्लेइंग की कोई एक्टिविटीज है, आई वांट टू डू इट विद देम. आई वांट टू हैव टी विद माय स्पाउस. यू नो, आई वांट टू ओवरसी द कुक कि खाना कौन सा बन रहा है, कौन सा लग रहा है, राइट? तो 5 o'clock के बाद आई कैन गो एंड प्ले जैज. माय बॉस शुड नॉट बी बॉदर्ड, राइट? और अगर इस तरह की चीजें हैं जो कि मैं अब नोटिस कर रही हूँ कि ऑनलाइन में बहुत ज्यादा हो रहा है, लाइक यू राइटली पॉइंटेड आउट. और स्कूल्स में, पाकिस्तान के स्कूल्स का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. एक मेरा मेल कोलीग मुझसे कंप्लेन कर रहा था, मैं उससे ऐसी पूछ रही थी, और यार ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की कैसी चले? ही सेड यार अजीब हरकत है यार, एक क्लास होती है सुबह 8:30 बजे, उसके बाद 10:30 बजे तक क्लास होती है, उसके बाद टीचर्स गायब हो जाते हैं, उसके बाद जी 12:30 बजे वो ऑनलाइन आते हैं. तो यू नो, मैंने ऐसे उसका मजाक उड़ाया. मैंने कहा भाई वो टीचर्स तेरे जैसे होंगे ना, देर से सो के उठते होंगे. बट आई डोंट एक्सपेक्ट देखो, ऑनलाइन का मतलब कभी भी ये नहीं है कि बच्चों का डिसिप्लिन खराब हो जाए ना. आई एम नॉट एन अर्ली मॉर्निंग पर्सन. आई एम नेवर प्रोडक्टिव. अगर आप सुबह में काम करवाएं, आई एम यूजुअली प्रोडक्टिव 11 बजे के बाद के टाइम में. फिर आप मुझसे रात 9 बजे 10 बजे तक काम कराएं, डोंट माइंड. बट स्कूल का तो एक कॉन्सेप्ट होता है डिसिप्लिन का, ऑफ टीचिंग द चाइल्ड रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी ना, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो. वो उस बच्चे को तो 8 बजे लैपटॉप के आगे या कंप्यूटर के आगे बैठ जाना चाहिए, और टीचर को भी तैयार व्यार होकर लेक्चर होमवर्क व्हाटएवर लेके बैठ जाना चाहिए, राइट? अगर वो टीचर्स ही 9:30 बजे से पहले उठ नहीं रही हैं, राइट, व्हिच आई हैव सीन हैपन इन पाकिस्तान, इट इज अनफॉर्चुनेट कि जी आपने ऑनलाइन के चक्कर में एक बच्चे को, क्योंकि उस बच्चे को उसके पेरेंट्स को ग्रूम करने में शायद 5 साल लग जाते हैं. आदत डालना, सुबह उठना, नहाना, यूनिफॉर्म पहनना, ब्रेकफास्ट करना और स्कूल के लिए तैयार बैग वैग पैक करके जाना, राइट? बट यू डिस्ट्रॉयड दैट इन जो 5 साल में उनकी आदत बिल्डअप हुई है, आपने 6 महीने में उसको तबाह कर दिया. एंड दिस हैबिट टू गेट ऑन बोर्ड अगेन विद रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी, क्योंकि पेरेंट्स लैक्स हो गए ना उस चीज के ऊपर, राइट? पेरेंट्स खुद 11-11 बजे सो के उठ रहे हैं, व्हाटएवर, राइट? सो दैट इज गोइंग टू मूव ऑन. Up there, if there are bosses who don't respect that, I'm sorry, then those bosses better go and sit on a cactus for all I care. Honestly speaking, people should make, like I said, ये वो time है जब people को lobby, I don't mean to say lobby in a negative way, but people need to get together and explain it to their boss कि भाई ये हमारा टाइम है, हमारा पेचेक इस टाइम से इस टाइम के लिए टाइडन होता है, चाहे हम ऑनलाइन काम करें चाहे हम ऑफलाइन करें. उसके बाद के टाइम आर फॉर अदर थिंग्स दैट वी हैव इन लाइफ. ओके, एंड पीपल नीड टू गेट टुगेदर. एक बंदे के कहने से ये बात नहीं होती है. सेकेंडली मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ इस चीज की कि ऐसी चीजें यू नीड टू राइट, यू नीड टू डॉक्यूमेंट देम. हमेशा इस चीज को डॉक्यूमेंट करें. रिटन चीज का हमेशा ज्यादा वैल्यू होता है. फ्रस्ट्रेट होके बॉस को मैसेज भेज देना, ईमेल या यू नो उसके चैट में कुछ लिख देना, डजंट वर्क. सेंड हिम अ फॉर्मल, हिम और हर अ फॉर्मल ईमेल ऑन दैट फॉर्मल आईडी
हॉटमेल और जीमेल पे भी भेजने की जरूरत है, so they understand the seriousness of the matter. True. और एक्चुअली आई थिंक रिटन कम्युनिकेशन को लोग ज्यादा सीरियस लेते हैं, वर्बल और Yes. टेक्स्ट मैसेजेस का कोई इम्पोर्टेंस होता नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी मैंने जो अपने करियर की बिगनिंग में ही ये समझ ली थी बात कि जब तक यू विल नॉट राइट फॉर्मली इट वोंट मैटर टू एनीवन, कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। True. Acha, women actually they try to find out this, magical keys to the kingdom, and they want to have that kingdom, this queen bee kind of feeling when they get into this leadership. सही है? तो क्या ऐसा feeling क्यों है ये ख़वातीन को कि we have to rule, we are the queen bee, and now we have to, manipulate all others around us. Let's say males or females or whatever. Like or males, मैंने ये भी एक research पढ़ी थी, हाँ, I should share that as well. कि न्यूयॉर्क टाइम्स में मैंने आई रेड इट कि इट्स probably no surprise that most of the men are bullies, and it was a survey published in workplace bullying published by Workplace Bullying Institute, and it said actually 40% of women are actually bullied, बट इसमें मैन इस तरह बेटर होते हैं कि दे एक्चुअली वो बुलिंग में जेंडर बायस नहीं करते, दे विल बुली बोथ जेंडर, दे डोंट केयर। Women, when they bully, they target more of the female out of insecurity and out of this कि भाई 70% of the time उनको ये होता है कि भाई other males will they will what should I say कि उनको पता लग जाएगा कि how competent or how better she can manage work than me, and this insecurity actually makes them target women more. So, what was your question? You wanted to talk about the queen bee phenomenon? Yes. Okay. So, agar people who are familiar with the concept of the queen bee, there is no king bee, right? Yeah. So the queen हमेशा ये होता है, आप कार्टून्स में भी देखो, आप मूवीज में भी देखो, आप ये एलियंस वाली जो आप साइंस फिक्शन वाली मूवीज देखते हो ना, उसके अंदर भी द पर्सन, चाहे वो एलियंस हो चाहे कुछ हो, सो वो डोमिनेटिंग फिगर जो होता है, दैट इज द क्वीन, दैट्स नॉट द किंग। एलियन वर्सेस स्पीशी देख लो, इंडिपेंडेंस डे देख लो, उसके अंदर भी जो वो होती है, इट इज द क्वीन हु इज डूइंग इट, राइट? So the concept of the queen bee is, queen bee करती क्या है? Queen bee is in that kingdom and she expects all the bees to be collecting that nectar, और वहां से वो honey combs वगैरह बना के, और वो सिर्फ she only gives orders and she is only there for the breeding purposes. That is what she does, right? और वहां पे कोई king का concept नहीं होता है, right? Not that the queen bee is asexual, but there is no king. Okay, so सारे जो है it is the रियाया, it is the workers, right? और queen bee का concept यही होता है कि no one moves up from the worker level. वो वर्कर ही रहते हैं, they will never move up to the queen position. So the concept of queen bee यही होती है कि जब तक till I am alive, और वो succession planning भी नहीं होती है कि मेरे बाद कौन, who is going to come and lead या whatever, right? So it is the queen bee syndrome, जिसके अंदर the queen is carrying, और she is like वो command and control center वाली चीज होती है ना, she is basically the administrator for the command and control center. और यही उसकी जो फिर queen bee की जो अपनी bullying होती है, because the male bees are more ardent workers, more stronger workers, bees के अंदर भी ये होता है। So queen bee का जो सारा रात होता है या सारा गुस्सा या अताप जो आप कहते हैं, वो अपनी फीमेल बीज के ऊपर ज्यादा होता है, एंड दैट इज वेयर द कॉन्सेप्ट कम्स फ्रॉम ऑफ अ क्वीन बी। सो ऑर्गेनाइजेशंस में भी यही होता है कि जब वो लीडरशिप पोजीशन पे वुमेन आ जाती है ना, तो वो शी क्लासिफाइज और शी कंसिडर्स हरसेल्फ टू बी अ क्वीन बी, और उसका सबसे ज्यादा जो एंड उसकी जो टारगेट होती है ना, दैट्स नॉट मेल एम्प्लॉयज, शी विल ऑलवेज बी मोर कंफर्टेबल। और मैं मेल एम्प्लॉयज पीयर्स की बात नहीं कर रही, छोटों की बात कर रही हूँ, राइट? अगर इसके अंडर में बहुत सारे असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, जिसमें से 15 फीमेल असिस्टेंट मैनेजर्स हैं और 30 आपके मेल मैनेजर्स हैं, her comfort zone and her soft corners will always be towards male managers rather than female managers, right? Assistant managers. So this is the concept of a queen bee, and this is very very typical of the corporate culture also. Corporate में बहुत होता है। ट्रू। अच्छा, एक और चीज ये भी है, शायद अब मैं कुछ हम टची टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और इसके बाद खवातीन को बुरा भी लग सकता है, तो लेट्स गो इन बिट ऑफ फेवर।
तो खवातीन के साथ women have this problem कि उनके लिए इतनी opportunities होती भी नहीं है in leadership, ठीक है. Let's say finance ले लें आप, law ले लें, other industries जो mostly men biased हैं, ठीक है, उनके अंदर उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलती नहीं है लीडरशिप की. तो जब भी उन्हें लीडरशिप अपॉर्चुनिटी मिलती है, दे वांट टू ग्रैब इट एंड दे वांट टू स्टे देयर फॉर लॉन्गर, एज लॉन्ग एज दे कैन. और शायद इसी इनसिक्योरिटी में दे ट्राई एंड किक आउट अदर वुमेन, या उनको बुली करते हैं कि लोग they have this consistent sense of pride कि भाई we are more deserving and we are the ones who need it. तो इसके अंदर मेरे ख्याल में अगर वुमेन को थोड़ा सा ये वो रियलाइज करें कि you share an identity as a woman with other women, and if you support your gender and if you support your females, so I think it will create a better environment for yourself as well, kyunki if people will see that you are supporting them, especially your female employees, they might be there by your side or at your back to support you later on if there is something that's disturbing. So बहुत you're so right. कुछ professions जो होते हैं ना, they're very very purely male dominated professions. उसके अंदर खवातीन आती ही कम है. अच्छा, जब अगर आप भी जाते हैं, let's say engineering, ठीक है, एक जमाना था engineering में, so like when we were growing up, हमारे खानदान में सारी खवातीन डॉक्टर्स थी और सारे मर्द जो थे वो engineers थे, right? Obviously I opted not to do either of it, but so very few women actually go into engineering. But a classical example है that when women also go into engineering, आप ये notice करो कि engineering में when they're making a career in engineering, their families are not very happy if they start choosing like fields like civil engineering, जिसमें field work बहुत ज़्यादा होता है यार, या if they're choosing a field like chemical engineering, right, क्योंकि उसके अंदर hazards वगैरह के बहुत होते हैं. So एक तो ये है कि ये हमारे जो roles होते हैं या जो हमारी अपनी preferences होती हैं for a career path, वो अभी भी बहुत ज़्यादा driven है by what our parents think are better for us, right? अच्छा जी, चलें, let's say आप engineering में आप भी गए, ठीक है. engineering बहुत ही obviously challenging field होती है, और engineering में even in the classroom कोई gender discrimination नहीं होता है कि जी so many women and so many men or whatever, ठीक है. majority of engineers जो मैंने देखी हैं, खवातीन engineers, वो क्या करती हैं, graduate करके पढ़ाने में चली जाती हैं. they want to start teaching in engineering colleges because एडमिशन तो मिल गया क्योंकि ग्रेड्स बहुत अच्छे थे, राइट. बट करियर की जब बात आती है तो घबराहट होनी शुरू हो गई, क्योंकि सुपारको या आई डोंट नो व्हाटएवर कंपनी में जाके उन्हें काम करना होता. उप्स, सॉरी, कंपनी का नाम निकल गया. बट एनीवेज, व्हाटएवर ऑर्गेनाइजेशन no, it's okay, it was positive. व्हाटएवर ऑर्गेनाइजेशन दे माइट वांट टू गो एंड वर्क फॉर, वहां पे मेल डोमिनेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है. और हमेशा हमारी खवातीन बड़े प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में बड़ी हुई है, रेज हुई है, ठीक है. यूनिवर्सिटी भी यूनिवर्सिटी के पॉइंट से जाती हैं, या पिक एंड ड्रॉप ड्राइवर्स होते हैं, या फ्रेंड्स के साथ पूल होता है, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, व्हाटएवर, ठीक है. सो अब जब करियर की बात आती है तो इंडस्ट्री मजीद मेल डोमिनेटेड होती है, राइट. सो एक औरत को वहां अपना मार्क बनाना, यस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, देयर आर नो टू वेज अबाउट इट, राइट. बट होता क्या, देयर आर वेरी फ्यू वुमेन हु विल प्रोग्रेस अप बिकॉज ऑफ द रीजंस आई जस्ट सेड. यू गेट मैरिड, यू हैव चिल्ड्रन, देयर आर यंगर चिल्ड्रन एट होम, और एक्सपेक्ट किया जाता है कि यंगर चिल्ड्रन की तरबियत का रोल जो है वो माँ घर पे रह के ही कर सकती है, ठीक है. सो खैर, हाँ जी, अब 5-6 साल का गैप आ गया उसके करियर में. लेट्स से शी कम्स बैक, बड़ी मुश्किलों से शी गेट्स बैक इनटू द इंडस्ट्री. चांसेस आर शी इज नॉट कमिंग बैक टू द सेम इंडस्ट्री, क्योंकि उस इंडस्ट्री के लिए वो 6 साल पीछे चली गई है, ठीक है ना. सो व्हेन यू ऑलरेडी लॉस्ट दो 6 years, उन 6 years को कैचअप करने में टाइम लगेगा, एंड उन 6 years तक ऊपर पहुंचने के लिए when you're trying to reach up or struggle to the top, there are already people who have gotten that experience. और जो देखें लीडरशिप पोजीशन में, आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक और बात बताऊं वजिया, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में भी लीडरशिप पोजीशन में आते हैं ना, not 100% is merit, it's also great networking. Yes. And your relationships with peers and your juniors, right? ऐसी कोई नहीं आपको MD या CEO बना देता है type of thing, oh wow, brilliant, 100% merit का person है. It's because आपके ताल्लुकात थे, आपकी relationships थी, आपकी रैपो थी. एक खातून 6 साल घर बैठ के लूज कर जाती है वो relationships, networks और रैपोस.
राइट, दैट इज द रीजन उसको टॉप पे आने में इतनी स्ट्रगल हमें नजर आती है, ठीक है। एंड इट्स नॉट पाकिस्तान, इट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। सी स्वीट की जो हम बात करते हैं 17% ग्लोबल है ये फिनोमेना, ठीक है। वेरी वेरी फ्यू पीपल ऑन बोर्ड, ठीक है। अब जब ये खातून आती है तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि जब नई इंटर्न्स आती हैं या नई मैनेजमेंट ट्रेनीज आती हैं या नई ग्रेजुएट्स आती हैं, तो आई शुड कीप माई सेल्फ इन देयर प्लेस, जो आपने सबसे पहले बात की थी एम्पैथी वाले। एंड आई शुड से यार देखो, मैं भी स्ट्रगल से गुजर के यहाँ आई हूँ ना, ये लड़की भी स्ट्रगल से गुजर के आई है। आई शुड बी हर कोच, आई शुड बी हर मेंटोर, एंड आई शुड, यार मुझे इसका हैंड होल्ड करना है। मेंटरिंग इज होल्डिंग हैंड्स, आई नीड टू होल्ड हर हैंड एंड मेक श्योर ये अगर उन तकलीफों से गुजरे भी तो आई एम देयर टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस एंड टेल हर के इस इंडस्ट्री में ये होता है बेटा, और इसी तरह हमें ऊपर इसमें प्रोग्रेस करना होता है। हम कभी इस टाइप के सक्सेशन प्लान्स खवातीन के साथ बनाते ही नहीं, अनफॉर्चुनेटली। दैट इज द रीजन वी डोंट, बिकॉज दे आर सीइंग कि भाई कहीं कोई फैमिली इशू होगा ये छोड़ के चले जाएंगे, तो वो कंसिडर ही नहीं होती हैं, नो मैटर हाउ कॉम्पिटेंट और हाउ डिवोटेड यू आर टुवर्ड्स योर प्रोफेशन। तो लोग इस बारे में उनको कंसिडर ही नहीं करते, स्पेशली जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों वर्क कर रहे हो, कॉर्पोरेट में एंड ऑल। सही। तो रीमा is asking another question. She's saying, does gender also makes one judgmental? Like if I'm a woman, I can do it, so can you too? Yes, it does. It does. Right. It does. That's an example which I just gave. कि जी कुछ खवातीन के अंदर ये जो मी टू वाली चीज है आपकी, उसके अंदर जी बहुत जजमेंटल ये हो जाता है यार कि देखो अगर मैंने स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंची हूँ, that's the positive side of being judgmental. If I can struggle and make it here, I know your problems, I understand them. Let's try to sort them and work around them. If I can do it, so can you. True. Absolutely. Positive judgmental भी हो सकता है, usually judgmental का word हम negative उसके अंदर लेते हैं, but yes, people can do it, right? And if men can do it, I can do it. This is a good phenomenon, actually. By the way, let me tell you something else I'm very very proud of. पाकिस्तान की history में in the entire government sector, I am the only female chief operating officer. There are no female chief operating officers. पाकिस्तान के किसी सरकारी अस्पताल में नहीं है। तो मेरे फैन मोमेंट्स तो बढ़े जा रहे हैं आपके लिए। जैसे मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा था कि मैं the more I research about you, the more amazing you get. So I'm so happy to hear that, and I just hope people can learn, and you know they can just reach out to me, and I'm so looking forward to helping people reach, you know, help them with their career goals or whatever. That's really nice of you, so nice of you. अच्छा, अब बात आती है थोड़ी पॉजिटिविटी की दोबारा। तो यू नो अब इसके अंदर ये होता है कि सिक्योर और कॉन्फिडेंट वुमेन जो होती है ना, दे आर नेवर यू नो अफ्रेड ऑफ लूजिंग देयर रोल, दे विल नेवर बी अफ्रेड ऑफ यू नो बीइंग रिप्लेस्ड बाय समवन एल्स, ठीक है। और इसके अंदर if they are confident and secure about their own self and their skills and their educations, they will actually uplift their female colleagues as well. So this is very important कि अगर आपको कोई insecurity और you know अपने बारे में कोई doubt है, तो उसको आप दूसरों पे implement नहीं करें कि भाई उन दूसरे उसके cost पे करें आपको. If you think कि you need to learn more, learn more. If you think you have to work on your self confidence, work on that and do not you know let other people pay the price of it. तो ऐसे जैसे लोग कहते हैं और जैसे हमेशा से मैंने सुना है कि people don't leave their jobs, they actually leave bad jobs, bad bosses, bad managers. So you know, therefore to have a female boss who values empathy, it is important to allow her to succeed as well. Like जैसे आप हैं, like और लोग होंगे, if you have empathy तो आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए कि जहाँ पे आपके अंडर काम करने वालों लोगों को लगे कि यू आर नॉट डिस्पोजेबल, और या आपके जाने से दे विल बी इन ट्रबल, तो दे विल बी सपोर्टिंग यू। सही। तो आपके नीचे जो लोग होंगे, अगर आप उनको, मैंने हमेशा ये पढ़ा है कि यू नो ट्रू लीडर्स आर दोज जो हु एम्पावर अदर्स वर्किंग अराउंड देम। इफ यू आर गिविंग दैट पावर टू अदर्स वर्किंग अराउंड यू, जैसे आपने कहा कि भाई पीपल वर सो यू नो कंफर्टेबल रिपोर्टिंग टू यू एनी इंसिडेंट दैट हैपेंड टू देम, तो अगर आप उनको एम्पावर करेंगे दे विल एक्चुअली वैल्यू यू। और ये वुमन को रियलाइज करना बहुत जरूरी है, किसी और को एम्पावर करने से आपकी पावर नहीं कम हो रही है, वेदर इट्स होम, इट्स वर्क, व्हाटएवर। तो आपकी पावर वही रहेगी। एक्चुअली empowering others will give you more power because you will become trustworthy for them. What do you think?
ओके सो अब मेरी एक पुरानी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें मैंने बहुत कम अर्से काम किया, जिस 10 मंथ्स आए, आई वाजंट गेटिंग अ लॉट ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, फिर आई लेफ्ट। तो उसके अंदर वो बॉस एक बहुत अच्छी बात कहता था, जब वो होता था ना, हम जब वो करा करते थे, एम्प्लॉय वैल्यूएशंस करते थे हर साल प्रमोशंस के लिए एंड व्हाटएवर, सो उसमें बहुत मजे की वो एक बात कहता था, ही यूज्ड टू सी, अब बहुत इन्वॉल्व था वो अपने एम्प्लॉयज के साथ, 400 एम्प्लॉयज थे, बट वो हर एक के साथ बहुत इन्वॉल्व था। सो वो ये देखता था ना कि यार ये बंदा, 400 एम्प्लॉयज है, छोटी कंपनी है, स्टेट रन कल्चर है, तकरीबन हर कोई हर एक को जानता था, वो भी बहुत सारे एम्प्लॉयज को जानता था। वो मुझसे अक्सर ये कहता था, आई यूज्ड टू हेड दैट पीआर एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स डिपार्टमेंट, तो वो मुझसे ये कहता था, ये देखो फलाना है ना, ये अपने इस बंदे की एवेल्युएशन को पुअर कर रहा है, जबकि ये बहुत केपेबल लड़का है। और मुझे कहने लगा, डू यू नो ये ऐसा क्यों कर रहा है? आई एम लाइक, वो उसका इमीडिएट बॉस है, मैं तो पॉजिटिव, आई एम अ वेरी पॉजिटिव थिंकर, मैंने इमीडिएट बॉस है, किसी ना किसी चीज से टेक ऑफ हो गया होगा। नहीं, क्या कहता है, नहीं, वो ये कहता है कि देखो अगर मैंने एक्स वाई जी की एवेल्युएशन अच्छी कर दी तो ये तो मेरी जगह पे आ जाएगा। तो मैंने कहा सो, तो कहता है हाँ यही तो बात है ना, कहता है तुम कहती हो सो, ये स्टूपिड आदमी ये समझता है कि अगर ये बंदा आगे आ जाएगा तो इसको ये भी तो समझता है कि मैं भी ऊपर जाऊंगा। सही तो बात है। although it was a state-run company, but I said, ये अच्छा सेट है, इंटेलिजेंट लड़का है, ये अच्छी बात है। He was a little younger than I was, so I used to, हर कोई उसको साहब बोलते थे, मैं पहले नाम के साथ उसको पुकारा करती थी। प्राइवेट सेक्टर की आदत थी ना नौकरी करने की। सो दिस इज वन थिंग दैट आई सेड। सेकेंडली, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो मैं कमराडरी की बात कर रही हूँ या जो मैं सपोर्ट सिस्टम की बात कर रही हूँ, जब आप लोगों को एम्पावर करते हैं ना तो लोगों को फील होता है ये मुझे ट्रस्ट करते हैं, और जब ट्रस्ट होता है ना तो लोगों की परफॉर्मेंस बेहतर होती है। मैंने एटलीस्ट अपने अराउंड में ही लोगों को देखा है कि वो बॉस जो हर 2 मिनट में फोन उठा के कह रहा होता है ना, ये कह रही होती है वो फलाना वाला काम है, हाँ यार 30 मिनट्स की डेडलाइन थी, क्या हो गया? एंड यू लाइक, ब्लडी हेल, 30 मिनट्स अभी नहीं हुए, ठीक है, लेट मी गेट टू फॉर माय 30 मिनट्स, यू कांट ब्रीथ डाउन माय नेक, राइट? आई एम वन ऑफ दोज बॉसेस जो काम देके लोगों को भूल जाते हैं। अच्छा, बट इसके पीछे भी एक पूरी साइंस है वजिया। इसके पीछे की साइंस ये है कि मैंने लोगों को ट्रेन और कोच इस तरह से किया हुआ है कि मैं उन्हें काम देके भूल सकती हूँ, कि दे आर इंडिपेंडेंट और आपको पता है यू कैन ट्रस्ट देम, एंड बिकॉज आई हैव इन्वेस्टेड इन देम, मैंने उनको काम सिखाया है, और अब वो उस लेवल पे आ गए कि ब्रांड न्यू पर्सन को मैं भी काम नहीं दूंगी, थोड़ी बहुत कंट्रोल फ्रीक हो जाती हूँ मैं भी एट टाइम्स, के ओ माय गॉड, सो उसमें ये है कि जिन लोगों को मुझे पता है ये केपेबल थे, नंबर वन, आप सही लोग पिक करें, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, इन्वेस्ट इन देयर ट्रेनिंग, उनकी कैपेसिटी बिल्डअप करें, और जब वो एक लेवल तक आ जाए प्लीज उनको छोड़ दें, उनको काम करने दें। आप ये नोटिस करेंगे कि जब आप उनको उनका काम करने देते हैं, डेलीगेट आप करते हैं, तो अपार्ट फ्रॉम मोर वर्क बीइंग डन, जो ट्रस्ट का एलिमेंट क्रिएट होता है ना, उसकी वजह से मी एज अ बॉस, मैं अपने बड़े लेवल के बहुत सारे काम कर सकती हूँ। नहीं तो मैं वो छोटे छोटे कामों में घुसी रहती हूँ, बाय द वे आपस की बात है, मैं एसईओ में घुसी रहती हूँ छोटे छोटे कामों में, कंट्रोल फ्रीक हूँ ना, बट कोई बात नहीं। एक्चुअली कंट्रोल फ्रीक, और कुछ लोग होते हैं शायद परफेक्शनिस्ट भी होते हैं, तो उन्हें लगता है हम जिस तरह कर सकते हैं ना वो कोई और नहीं कर सकता, तो आई थिंक आई विल ओनली बी परफेक्ट टू डू दिस जॉब। ये भी मसला है, ये भी मसला होता है, ये भी मसला होता है। वो टीचर रह चुकी हूँ ना 13 साल, तो ये भी प्रॉब्लम होता है। छोटी और ये खवातीन होने का भी मसला है कि वुमेन को लगता है कि जो काम हम बेटर कर सकते हैं वो हम कर लें, एंड मे बी बिकॉज दे डोंट वांट टू ट्रेन अदर्स टू डू दैट, उनको वो टाइम वेस्ट लगता है, तो वो कहती हैं ओके आई विल डू इट। एक रीजन ये है कि हम दूसरों को इसलिए ट्रेन नहीं करते कि वी फील इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, कि ओ माय गॉड इस पे इतना टाइम लगाया, मैं खुद ही कर लेती, ठीक है। एक रीजन ये है, व्हाई शुड आई टीच दिस पर्सन दिस जॉब, ये तो मुझसे ज्यादा कर लेगा, मुझसे बेहतर कर लेगा, मुझसे ज्यादा सीख जाएगा, राइट? ये भी एक एलिमेंट होता है, राइट? बट यहाँ पे जितने लोग, पीपल हु आर ट्यून्ड इन, पीपल हु आर लिसनिंग, या बाद में भी सुनेंगे, आई स्ट्रांगली अर्ज एवरीवन टू रीड लीन इन, ठीक है। शेरल सैंडबर्ग की बुक है लीन इन, अबाउट इवन यूरोप और यूएस डेवलप्ड इकोनॉमीज में। शेरल सैंडबर्ग आपको बताएगी कि जब उसको टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना था, और शी इज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ फेसबुक बाय द वे, कि जब उसे कॉलेज में एडमिशन लेना था तो लिटरली उसके पेरेंट्स का ये डिबेट हो रहा था कि भाइयों के लिए बेहतर कॉलेज था और उसके लिए बेहतर कॉलेज नहीं था, ठीक है। सो यू नीड, एवरीवन हियर नीड्स टू बी रीडिंग लीन इन, और वो उसके अंदर ये कहती है कि विमेन, अगर मुझे ये पेपर लिख के सबमिट करना होगा ना भजिया, मैं जब तक 100% श्योर नहीं हो जाऊंगी ना इस पेपर की ऑथेंटिसिटी के बारे में, आई विल नॉट सबमिट इट। मेन आर नॉट लाइक दैट, 60% भी सही हुआ तो सबमिट कर देंगे। दे विल। विमेन बहुत रिस्क अवर्स होती हैं,
ठीक है, women are not और थोड़ी frustrated. परफेक्शनिस्ट होती हैं, शायद उनको लगता है कि वो उनका वर्क बहुत परफेक्ट और स्पिक एंड स्पैन लगना चाहिए. Lean in is my mantra. I live by the lean in. So women should be reading lean in. Last में. Great. सही. देखें, हम we are over time. माशाल्लाह से 1 घंटा हो गया और हमें पता नहीं लगा है. It was such an interesting conversation. Seriously, I don't want to end it. I'm so happy. मगर I think it's time कि हम अपने ending notes दे दें और इसके बाद फिर we will see and meet another time inshallah soon. Inshallah. So would you like to go first for your ending notes? Yeah, I should go. Yeah. Let me. You can wrap up because you are the host. So I want everyone who's tuned in here, everyone who's been listening, everyone who's been kind enough to like my post on my Insta and FB, and cross post between me and Vajia. Please remember that ये जो हम बातें कर रहे होते हैं ना कि women supporting women and women lifting each other, believe me, there is nothing stronger than a group of women united together. हम सबकी अपनी स्पेशलाइजेशन है, हम सबके अपना स्किल सेट है, हम सबके अपने एडवांटेजेस हैं, जो सिनर्जीज हैं, जो हम एक दूसरे के साथ लेके आते हैं. ठीक है, जहां हो सके, जिस मौके पे हो सके. अगर आपकी कोई स्किल सेट नहीं है, अगर स्कूल टीचिंग मेरी स्किल सेट नहीं है, बट इफ आई नो वजीहा, आई एम गोइंग टू राउट दैट पर्सन टू वजीहा. आई एम नॉट गोइंग टू से मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं पता. आई विल स्क्रॉल डाउन माय फोन बुक एंड आई डू दैट ऑल द टाइम. आई कॉल माई सेल्फ अ नेटवर्कर because I connect people, I bridge people. मुझे लगता है मेरा बहुत काम आसान हो जाता है. एक तो ये मेरी जान छूट जाती है honestly. 2, I get the right person for the right job connected. तो प्लीज अपनी स्किल सेट को यूज करें. खुद अगर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते या डायरेक्टली हेल्प आउट नहीं कर सकते, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को निकालिए और लोगों को कनेक्ट करिए, स्पेशली वुमेन को. We need all the support to each other, to lean in and to give support to each other. We need to do that for us. Perfect. बहुत अच्छी बात है क्योंकि women को actually if you empower your own gender, आप भी कहीं ना कहीं empower हो रहे हैं. If you start giving, you actually get a lot. Appreciative हो दूसरी women और उनके काम के लिए, बजाय इसके कि आप हर वक्त तनकीद करें. कोई भी इंसान बुरा नहीं होता. हाँ, आपको काम पे एतराज हो सकता है and you can actually give constructive feedback about other women and it will help them flourish. मैं 2 बातें कहना चाहूंगी, 2 नहीं एक्चुअली ज्यादा हैं. एक तो ये कि इफ यू आर अ गर्ल बॉस, इफ यू आर अ फीमेल बॉस, यू शुड बी अ गुड वन, लीडिंग बाय एम्पैथी. ये एक इनबिल्ट ट्रेट होता है वुमेन का और उनको वो लूज नहीं करना चाहिए जब वो लीडर्स बन जाएं. If you lead with empathy, there is nothing else I think you need more, and you will actually be secure. So leaders, that's a very good quote from John Maxwell, that leaders become great not because of their power, but because of their ability to empower others. Keep on empowering people and you will not lose your spark. And if you are someone who's working under a bully boss, then 2 or 3 things for you. Okay, hold your power. Bullying is essentially, a game or a tug of war. Jo, especially in females, it's like, power play. तो और पावर प्ले या ऐसे बुलीज के साथ डील करने का एक ही अच्छा तरीका है कि do your best at your work. Do not, nothing deflates a bully more than when they actually have no effect on their victim. So if you are working under a bully, so just keep on working on your task, do it well, and don't give them a chance to say anything to you. And keep your communication as formal as it can be. Yeah. And you can always try to have written communication with them. Documented communication is actually the best way to deal with bullies. Do not take their words, verbal words, for anything serious. If you are working with them, try and keep your conversation documented. All right, Azra. So we'll say bye-bye. And thank you for joining, and thank you for everyone who watched. We will put it on YouTube as well, so you can actually see it on my YouTube, and I will share it with Azra as well. So thank you for joining, and thank you for giving me this opportunity, Azra. It was wonderful, and we will meet again. Thank you so much, Vijay. I really liked being here. I loved it. Thank you so much. Thank you. My pleasure. Thank you.